रनिंग मुझे लगता था कि ये मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा. आई वॉज ए काउच Oh, पोटैटो about 104 kg. Ego at हो गई. okay. मतलब that looks like a good pattern to a simple person, ना, to a layman. But actually, that involves a very good strategy. Hello, everyone. A very good morning, good afternoon, and good evening to all the viewers and audience. We have with us today the ultra Tuffman Balraj Kaushik, who is not just a teacher by profession, but with passion as well. He has taught many and inspired many on the advice or paths to take up running as a passion or a sport. We welcome you, Mr. Balraj Kaushik. How are you today? I'm fine. Shivam. So, this session is much more about how you started your running and what inspired you. आपको क्या ऐसा motivating factor अंदर से लगा कि हाँ मुझे अब running take up करनी चाहिए. Okay. Running was the last thing on my mind. Running मुझे लगता था कि ये मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा. But I was quite healthy, in the Indian terms. I was fat actually. I was a couch Oh, potato, about 104 kgs. 104. 104 kg, right? Yes. And what is the current weight, if I may ask? Uh, it's 63 now. You almost lost 40% of yourself. I almost lost a person from me, Certainly. but I gained a lot. I gained a lot of confidence. I gained health. I gained many things. When did you actually start? आपने कब शुरुआत करी थी? 104 के टाइम पे आपने कब डिसाइड किया था कि हाँ मुझे करना चाहिए कुछ ना कुछ? Well, it was in 2017 I started. Uh, Running was the last thing in my mind, as I told you. रनिंग तो मतलब मैं सोच ही नहीं सकता था ना कि मैं रनिंग कर भी सकता हूँ कि नहीं. So I started going for daily walks. मतलब there are certain points in your life. कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं कि आपको पता है कि यार अब बस बहुत हो गया. कि अब तो कुछ करना पड़ेगा बॉडी का. शेयर करना चाहेंगे? हाँ, why not? वन वाज कि मैं मतलब मोटा जब था तब भी थोड़ा एक्टिव था. तो एक और बंदा था जो मोटा था और इतना एक्टिव नहीं था. वो कहता कि हम तो एक जैसे ही हैं. तो ईगो हर्ट हो गई. तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं इसको दिखाऊंगा कि मैं इसको ठीक करता हूँ. और एक दूसरा है कि मैं आई वेंट टू बाय अ ट्राउजर. एट दैट टाइम माय साइज वाज 44 वेस्ट साइज. मैंने उसको बोला कि एक ट्राउजर दे दे. कहता कि 46 आएगी आपको. मैंने कहा नहीं भाई, मेरी ट्राउजर है, मैं पहनूंगा तो मुझे पता कितनी आएगी. 44 आएगी. कहता नहीं नहीं सर, मैं भी रोज सारा दिन ट्राउजर्स ही बेचता हूँ, इट विल बी 46. तो मैंने कहा चलो. उसने अपना मेजरिंग टेप निकाला. ही set around my waist and it was 45 and something. It was more than 44, which I thought. Then I told him that I don't want to buy a trouser. I'll only buy the trouser when it is at 30. You did that? Yes. At one point of time, it was 28. Is it a mandate कि आप 40% रिड्यूस करके ही मानेंगे, क्योंकि 44 से भी 40% रिडक्शन पे ही 28 आएगा. बस एक्चुअली हुआ ये था कि आई वेंट इन टू वॉकिंग. मतलब कुछ भी करके वेट लूज करना था, कुछ भी करके, है ना. तो वॉकिंग वॉज एन इजी वे फॉर मी. हमारे यहाँ एक पार्क है, मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है. उसको बारादरी बोलते हैं. जो लोग मेरे को स्ट्रावा पे फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे वर्कआउट्स देखते हैं, उनको पता है कि मैं डेली बारादरी जाता हूँ. मतलब बारादरी इज लाइक अ सेकंड होम टू मी. तो मैं तो उसको बोलता हूँ कि बारादरी जो है वो मेरी माँ है. तो जो कुछ भी मैं आज हूँ, अगर मैं अल्ट्रा टफ मैन हूँ या कुछ भी हूँ, रनर हूँ, वॉक कर रहा हूँ, कुछ भी हूँ, is because of that place called Baradari. So Baradari has a very special place in my heart. I started going for daily walks. Initially तो run छोड़ो, jog भी नहीं कर पाता था. Started losing weight, कुछ डाइट का थोड़ा सा चेंजेस किया, है ना. 80 पे आके फंस गया. 80 तक तो आ गया, 6 7 8 महीने में आ गया. उसके बाद थोड़ा फंस गया. उसके बाद अगले 3 4 5 महीने हिला भी नहीं. मैं और ज्यादा वहां पे किलोमीटर्स करने लग गया, और ज्यादा वहां पे राउंड्स लगाने लग गया, ना रूटीन और भी ज्यादा रिग्रेस कर ली. तो लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ. कुछ मतलब उसको फिर बाद में पता लगा कि इस स्टेज को प्लेट्यू बोलते हैं. कि आपके वेट जब आप लूज करते हो तो एक पॉइंट आ जाता है व्हेन इट डजंट गो स्टैग्नेंट हो एनीमोर. जाता है उस पॉइंट पे. हाँ, स्टेगनेंट हो जाता है, प्लेट्यू बन जाता है. तो आई डिसाइडेड, मतलब थोड़ा स्टबन मैं हूँ, शायद इसी वजह से मैं अल्ट्रा टफ मैन भी बन पाया. थोड़ा स्टबन हूँ मैं. मैंने डिसाइड किया कि अब 80s या 70s में नहीं, अब वेट 60s में जाएगा. कुछ भी करके जाना पड़ेगा.
मैंने थोड़ा गलत तरीके से वेट लूज किया था। आई डोंट रिकमेंड दैट टू एवरीबॉडी। मैंने बहुत ज्यादा क्रैश डाइटिंग पे मैं चला गया था, और इनफैक्ट आई लॉस्ट 25 kgs इन द नेक्स्ट 45 days। कीटो डाइट आर यू रेफरिंग टू? नहीं, कीटो नहीं, मैं सिर्फ सब्जियां जो होती हैं, वेजिटेबल्स, उनका बॉईल करके सिर्फ पानी पीता था, ओह। बस, और कुछ नहीं। और मैं मतलब अराउंड 25 किलोमीटर तक मैं चलता रहता था, जॉग करता रहता था, चलता रहता था, जॉग करता रहता था। मतलब समटाइम्स मैं वहां पे बेहोश हो जाता था। मतलब दैट वाज अ रॉन्ग वे हम्म। टू लूज वेट, दैट वाज अ रॉन्ग वे, बट आई हैड इट इन माय माइंड। और उसके बाद वेट मेरा 57 तक आ गया था। आई वाज तब मैं अंडर वेट हो ओह। गया था, है ना, और मसल लूज होना शुरू हो गया था बॉडी से। मसल मास काफी कम हो गया होगा। हाँ, धीरे धीरे अकल आई, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया डाइट्स के बारे में। अब मैं जितना रनिंग के बारे में पढ़ता हूँ या रनिंग करता हूँ, उससे ज्यादा मैं डाइट्स के बारे में पढ़ता हूँ। सो नाउ आई एम मेंटेनिंग एन हेल्दी वेट, और इसी के साथ साथ आई रीड अ लॉट अबाउट डाइट। मसल मास भी अब अच्छा हो गया है, सब कुछ सही हो गया है। रनिंग। सर जैसा आप बता रहे हो कि आप डाइट के बारे में काफी ज्यादा पढ़ते हैं, तो टू अचीव द टाइटल और टू हैव दैट मच एंड्योरेंस एंड स्टेमिना, दोनों चीज कितना रोल प्ले करती हैं अपना? डाइट प्लस योर एक्सरसाइज एंड योर वर्कआउट्स। लिसन, आई वुड से कि डाइट प्लेज अ मेजर 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 रोल। डाइट का बहुत बहुत ज्यादा रोल है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। आई डोंट इवन टेक एग्स, तो मतलब मैं वेजिटेरियन ही हूँ, और इंडियन फूड जो है वो बहुत अच्छा है। मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ भी सप्लीमेंट्स वगैरह भी ना लूं। तो घर में जो बनता है, मतलब इट इज हाउ यू सिलेक्ट, वो काफी ब्रॉडर एरिया। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रेनिंग इज टू स्लीप प्रॉपरली। I never compromise with 8 hours of sleep. If you are not sleeping for 8 hours, you are not doing justice to your bodies. मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि जो आपका रूटीन है, जैसे आपका कोई रनिंग का रूटीन है, कोई ट्रेनिंग सेशन है, और आप 8 घंटे नहीं सोए हो, तो बेटर इज टू मिस दैट सेशन। First, complete your sleep. You are not going to benefit from that session. In fact, you are going to be on the disadvantage side. एंड विद इम्प्रॉपर स्लीप यू रिकमेंड कि सेशंस पे ना जाओ बिकॉज? Your heart rate will be ओह। higher. This is what I have experimented on. ओह, सो इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। I experiment a lot with my paces. I experiment a lot with diets. How a particular diet affects your run on the next day. I have experimented a lot, and I have come up with very amazing conclusions. So when you went for Chandigarh Stadium 2019 and you got the title Ultra Toughman, उससे पहले आपकी longest run कितना था? उसके पहले I did a 200 kilometer run. And that was That was an intercity run. That was from Amritsar to Chandigarh. अमृतसर टू चंडीगढ़। 200 किलोमीटर्स काफी टाइम लगा होगा। I took 27 hours and 24 minutes. And your title in 2019, you completed 100 kilometers. Yes, it was in 2019. After that, I became very confident. Yes, I could do long runs, because actually I did a lot, not practice. Unknowingly, I came into ultras unknowingly, because in pursuit to lose weight, मैं 12 के चक्कर लगाता रहता था। बारादरी का एक ट्रैक है 1.4 किलोमीटर का, उस पे चक्कर लगाता रहता था, 30-30 चक्कर। जैसे मैंने 40-42 किलोमीटर, अब मेरे को पता भी नहीं होता था ना कि यार ये क्या होता है, वो क्या होता है, रन भी होते हैं। बस चक्कर लगाता रहता था, जॉगिंग करता रहता था। मतलब आई वॉज नॉट इन टू प्रॉपर रनिंग इवन दैट एट दैट टाइम। बहुत से लोगों को पता है जिन्होंने मेरा वो, जो मेरे अल्ट्रा टफमैन वाले टाइटल वाले रन में थे, तो आई वॉर्म्ड फॉर 18 आवर्स इन ड्यूरिंग दैट रन। Okay. It was only for the first 6 hours I ran. I did, I think, 50 kilometers in the first 6 hours. And then next 18 hours, I did 123 kilometers of walking. काफी काफी ज्यादा। And it was only because of that I walk a lot. Even now, I walk a lot. I love सर कल walking आपका actually. रन कहाँ पे था? उसका मैंने उसके नंबर्स तो देखे थे। इट वाज 25 किलोमीटर्स एंड देयर वाज समथिंग अनदर ट्रायंगुलर 25 किलोमीटर्स। आई थॉट कि आपसे पूछूंगा, मुझे समझ में नहीं आया वो था क्या। Actually, as I told you that I experiment a lot with the हम्म। paces.
मतलब that looks like a good pattern to a simple person, to a layman, but actually that involves a very good strategy. Because listen, the triangle, the first part of the triangle, from start to the middle To part, the peak. we go from Hmm. bottom to the top. Yes, to the peak, is the part where you are accelerating per kilometer. One stick represented, one split 1 kilometer. represented 1 kilometer. Okay. Yeah. So it was 13. Till the peak was at 13th kilometer. So you start slowly, you slowly warm up your Uh, muscles, you get into a rhythm, and then start increasing the pace. Start increasing the pace for each kilometer. Then you peak at 13 and kilometers then you slow down from 13 to 1. and then start decreasing. And how does that help you? How does getting slow help you? It acts as a recovery. It recovers your muscles. It recovers your heart. So it is a technical part. And one more thing I like to add is, I don't know whether you have noticed that figure also or not. I did exactly 25.25 kilometers in 2 hours, 22 minutes and Yeah, 22 I did seconds. notice that 2 hours, 22 minutes, and 22 seconds. That was exact 2 to 2 across. So yes, 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 yes. It was predetermined that I would run this distance in this time. It was predetermined. But It that was that decided a requires day so ago. much control on your body because you know the exact kilometer speed that you're running at, and then you're decreasing. Yes, That's really yes. good. That requires a lot of calculation, and being a mathematics teacher helps a lot. Oh, that is the reason why you mentioned the part I'm stubborn. I like complex things. Yes, yes, yes. And it keeps you interested. It keeps you it keeps the run Yeah, interesting. yeah. Anything that involves numbers, Not only triangular runs, I have done many sort of runs. anything with numbers keeps it interesting for a mathematics teacher. Yes, anything, anything. If you see my tomorrow's activity, I have uploaded that into today's story, yesterday's figure. So first I ran 25.25 kilometers in 2 hours, 22 minutes and 22 seconds. And immediately after finishing that run, I walked 13.13 kilometers in 2 hours, 22 minutes and 22 seconds. That's amazing. And after again in the evening, I did 13.13 kilometers walk for 2 hours, 22 minutes and 22 Your seconds. every Again. step is calculated. Your every movement you calculate that this This, much is I'm going to do in this much time and this much I love seconds. this. And I understand being a tough man, an ultra tough man, Shere Punjab, and running across many races, बहुत ज़्यादा sacrifice आता है इसमें और बहुत ज़्यादा support भी आता है. एक support का element तो मैंने देखा था आपकी stories में. मैं उसके बारे में पहले जानना चाहूंगा. She is my daughter. Every run is possible because of her. And all the videos and stories are possible because of her. Absolutely, absolutely because of her. कल के रन के बारे में एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि कल it was I started it was calm. The weather was very calm. During the first kilometers, it was there were thunderstorms. It was lightning all around. After few minutes or few kilometers, I think it was in the third or fourth. No, it was in the seventh kilometer. It started raining heavily and it was quite windy. Matlab, you can say the wind was almost at 35 to 40 kilometers per hour. So it was almost impossible to run. And she was there to make the videos. मैं आपको एक वीडियो अगर बोलोगे तो मैं आपको शेयर करूंगा. तो इट वाज लाइटनिंग और वहां पे ना एक थोड़ा सा थोड़ा ब्लास्ट टाइप भी हो गया था लाइटनिंग की वजह से. Oh, She captured that and I was running. She captured that sure, also. sir. She's in the 16th year and she has been accompanying me for almost 3 years now. That's great. Any advice that you would want to share with our viewers and audience that what it takes and what effort should one put in to achieve the title of Ultra Tough Man or Shere Punjab or a Tough Man? That's what. And that is consistency. I did read that as well in one of the WhatsApp stories. You did mention a quote about consistency. Yes, yes. Matlab, be it any part of your life, whether it is studies, whether it is athletics, any game, anything in your life, you just have to be consistent. You can get motivated by anybody. Certainly. I'll motivate you today. है ना? Tomorrow you'll run. What about day after tomorrow? Correct. I won't be there to motivate you maybe. है ना? It is discipline that keeps you going. So most important thing is consistency. Wait for the results to happen. They are not going to happen overnight. You just keep on going, keep on going, keep on, and believe me, you can do anything. मतलब
मैं एक इंसान हूँ जो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं 100 मीटर भाग सकता हूँ। अगर मैं भाग सकता हूँ, मैं दुनिया का सबसे निठल्ला निकम्मा, आप मेरे को नहीं बोल नहीं, सकते हो। आप एज ए यू क्राउड कैन पोटैटो से सारा दिन दैट। बैठा रहता था और खाता हम रहता। उनको अरे ऐसा नहीं, नहीं बोल सकते। अरे नहीं, मैं तो अपने बारे में बोल सकता हूँ ना कि दिस इज व्हाट आई वाज। करेक्ट। If a lethargic person like me can do it, then all of you, anybody, including Shivam, talking to me, can do it. मतलब जब मैं कहीं बोलता था ना कि आपने 200 किलोमीटर कैसे कर लिया, मैं बोलता हूँ आप सभी कर सकते हो। It is all about your mind. It is all about where do you focus. करेक्ट। If you are determined to do it, your body is capable of doing amazing, amazing things. On that note, the consistency, the dedication, self motivation, and the willingness to achieve is very important for any runner to be a tough man, ultra tough man. Thank you so much, Mr. Balraj Kaushik, for joining us